student of class 11. Once again we are here with a new video, and in this video we are going to discuss about a force, a type of force, and this type of force is known as friction. So in this video we will discuss about friction, what is friction, what is the cause of friction, types of friction, and few question that how can we solve the question which is given on the friction. So let us start this video. Now suppose you decide to ride a skateboard and you push off the ground and start moving. Now according to first law, if no force is acting on your skateboard, you will continue to move. But what happened? Your skateboard slows down because of friction. You are moving, but time to time the skateboard is reducing in its speed and you are going to slow, and after some time you will stop. Means there is some force which is opposing your motion, and that is called friction. So friction is the force that opposes the motion between two surfaces that are touching each other and they are in motion, or they tend to move on each other. So the amount of friction depend on the two factors. One is the kind of surface and the second one is forces pressing the surface together. These are the two factor on which the friction depends. If the surface is so smooth and if the surface is rough, so you can understand that what will happen when you are moving. Now what is the cause of friction? What causes friction? Even though the surface may look very smooth, and if you magnify the surface, then you will find that it is not as smooth as it was looking. मीन्स जो सतह बिल्कुल देखने में स्मूथ लग रही है, ज़रूरी नहीं कि वो बिल्कुल स्मूथ हो, उसमें थोड़ी ना थोड़ी रफनेस रहती है. सो एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल एंड द मॉलिक्यूल्स कम टुगेदर टू मेक बम्प्स, and some surfaces have molecules that leave large bump and some leave smaller bump, but all surfaces have bumps. मीन्स जो सतह पूरी देखने में स्मूथ लग रही है उसमें भी छोटे छोटे उभार होंगे, कुछ बड़े हो सकते हैं, कुछ छोटे हो सकते हैं, बट थोड़े बहुत उसमें उभार होंगे. सो microweld occurs when two bumpy surfaces are rubbed up against each other and they stick together. सो जब भी कोई दो सतह आपस में एक दूसरे पर मूव कर रही होती हैं, तो ये जो बम्प्स, ये जो उभार होते हैं, वो एक दूसरे में फिट हो जाते हैं एंड दे स्टार्ट अपोजिंग टू मूव द बॉडी ऑन ईच अदर, एंड दिस इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन. दिस कॉजेज दैट बॉडी हैव टू अप्लाई फोर्स कंटिन्यूसली टू break out this roughness, and it have to move continuously. So these are the there are so many examples in your daily life where you see the friction, the effect of friction, and what will the effect of friction on the your shoe soles, and the tire also. When you buy the bicycle or motorcycle or car, then the tires are very new, but after using regularly you see that they are going to be bald. मीन्स उनकी जो सतह है वो बहुत चिकनी होने लगती है, मीन्स वो घिसने लगते हैं. और जब टायर घिसने लगते हैं या जो सतह बिल्कुल घिस जाती है, उस केस में हम जब इसको ड्राइव कर रहे होते हैं तो वहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, स्लिपरी हो जाता है, फिसलने की संभावना बहुत रहती है, तो ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती है. नाउ स्टिकिंग टुगेदर, द ग्रेटर द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, द ग्रेटर द फोर्स ऑन द माइक्रोवेल्ड, एंड द ग्रेटर फोर्स इज नीडेड टू ओवरकम द माइक्रोवेल्ड टू मूव द ऑब्जेक्ट. मीन्स मोर द फोर्स टू बी वेल्ड, जितने ज़्यादा उभार होंगे, जितने ज़्यादा रफनेस होगी, उतनी ज़्यादा आपको ताकत लगानी पड़ेगी उसको तोड़ने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए. सो ग्रेटर द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, ग्रेटर द फोर्स ऑफ द माइक्रोवेल्ड, एंड ग्रेटर force is needed to overcome the microweld to make the object move. Now the type of friction is, one is static friction. Suppose your little brother gets into a box and want to move him. He is too heavy to lift. You try to push the box and doesn't move. What type of acceleration does it have? When you push a heavy box, it is not moving, but you are applying force and it is not moving. It means the force which you are applying, that is not able to move that object, means the acceleration is zero. But when you make the force more in value, more in magnitude, so after some time the box start moving. So static friction,
remembers Newton's second law of motion. If the acceleration is zero, the net force is zero, and so because you can't move it, another force is being applied to cancel out your force. Suppose you are pushing a box and you are applying force of 10 Newton and the box is not moving. It means a force is there which opposes your applied force. So what is the force which is opposing your force? The same as you are applying. Since you are applying 10 Newton of force but the box is not moving, it means the force of friction which is between the surface and the box is also of 10 Newton, because both the forces are equal and opposing each other. That's why your box is not moving. That opposing force is friction caused by the micro weld between the bottom of the box and the floor. This type of friction is called static friction, means when you tend to make the body move and it is not moving but you are applying force, and in that case the friction which is between the surface and the box is known as static friction. Static means रुका हुआ, means box रुका हुआ है, उस पर फोर्स लग रहा है, इसका मतलब कि उसके बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है, इसको हम बोल सकते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन तब लग रहा होगा जब हम किसी बॉक्स को ढकेल रहे हो और बॉक्स मूव ना कर रहा हो, तो हम कह सकते हैं कि एक फोर्स हमारी तरफ ही लग रहा है जो उस बॉक्स को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, तो उस फोर्स को हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, एंड दिस इज द अपोजिंग फोर्स विच वी आर अप्लाइंग ऑन द बॉक्स। सो दिस इज द स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब कि ये वो फ्रिक्शन है जब बॉक्स मूव नहीं कर रहा है और बॉक्स को मूव कराने की कोशिश की जा रही है, तब ये फ्रिक्शन अराइज हो रहा है, एंड दिस इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। द नेम itself have meaning. Static means रुका हुआ. So static friction is the friction between the two surfaces that are not moving past each other. In this case, your push is not large enough to break the micro weld and the box remain stuck to the floor. Means you are applying the force but box is not moving. It means your force is not sufficient to move the box, and your force and the force which is applied by the box and floor towards you is the static friction, and it is same value as we are applying the force. Next is sliding friction. Suppose you had applied force and box is not moving, but after some time when you call any other boy also to push, the box start to sliding. To help you move your little brother, you decide to ask a friend. You both push and slowly but not easily the box start to slide across the surface और अक्रॉस द फ्लोर। मीन्स आप धक्का लगा रहे थे, बॉक्स नहीं बढ़ रहा था, तो आपने अपने दोस्त को बुलाया, आप धक्का लगाने लगे और अब बॉक्स चलने लगा, मीन्स बॉक्स उस सतह पर फिसलने लगा। तो अब जो फ्रिक्शन उसके बीच में लग रहा है उसको हम बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो व्हेन यू स्टॉप पुशिंग इट क्विकली स्टॉप मूविंग। स्लाइडिंग द बॉक्स इज डिफिकल्ट as there is still a resistance. Although you have overcome the micro weld, there is a still sliding friction occurring. Means उस माइक्रो वेल्ड को तोड़ने के लिए आपने फोर्स लगाया, लेकिन अभी भी चूंकि बॉक्स सतह पर आगे बढ़ रहा है, जैसे आप रोक दोगे बॉक्स फिर से रुक जाएगा। मीन्स चलते समय उस बॉक्स और फ्लोर के बीच में कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जब बॉक्स और फ्लोर के बीच में फ्रिक्शन लग रहा था और बॉक्स रुका हुआ तो कौन सा फ्रिक्शन लग रहा था? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। Now sliding friction is the force that opposes the motion of two surfaces sliding past each other. जब दो सतह एक दूसरे पर फिसल रही हूँ उस समय जो फ्रिक्शन काम कर रहा है इनके बीच में, उसको हम नाम देंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन का। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज caused by micro weld constantly breaking and then forming again as the box slides along the floor. So to keep the box moving, you must continuously apply a force to overcome the sliding friction. Means when the box starts sliding on the surface, you have to continuously apply the force to make it slide on the surface. Otherwise, when you stop, the box will also stop. The next one is rolling friction. Have you ever seen a car stuck in the snow? Every time the driver step on the gas, the tires just spin and the car doesn't go anywhere. कभी कभी आपने देखा होगा कार बर्फ़ में फंस जाए या मिट्टी में फंस जाए, तो ड्राइवर जो है वो बहुत फोर्स लगाता है, बहुत एक्सीलेटर को यूज़ करता है, तो हम क्या देखते हैं कि जो पहिया है वो मिट्टी पर केवल रोल कर रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। दिस इज बिकॉज देयर इजंट enough friction between the slippery ground and the tire. How could you create more friction to get the tire to move the car? अब कार का पहिया मिट्टी पर फिसल रहा है, कार का पहिया मिट्टी को पकड़ नहीं रहा है। मिट्टी को पकड़ता तो कई पहिया घूमता और आगे बढ़ जाता, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि पूरा कार का पहिया जो है केवल स्पिन कर रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। तो
तो हम क्या करते हैं, हम वहाँ पर कुछ बालू डाल दें या वहाँ पे कुछ कंकड़ पत्थर डाल दें जिससे कि वहाँ की सतह थोड़ी रफ हो जाए, एंड देन इफ द फोर्स इज अप्लाइड एंड देन द कार विल मूव. So the rolling friction is the friction between the rolling tire and the ground is called rolling friction. Rolling friction works partly because of micro weld. Rolling friction is much less than the friction than static or sliding friction. Rolling friction की value सबसे कम किसके फ्रिक्शन से, स्टैटिक्स और स्लाइडिंग फ्रिक्शन से. तो रोलिंग फ्रिक्शन इज मच लेस फ्रिक्शन दैन द स्टैटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन. दिस इज वाई इट इज ईजियर टू यूज अ dolly than pushing your little brother in box. Means if you have seen if the box, heavy box have some pulley, then it is very easy to move that box, otherwise it is very difficult to slide or to make it move on the surface. So rolling friction is less than the static or sliding friction. Now the factor affect the friction, as we had discussed earlier also, the roughness of the surface, extent to which the two surfaces press together, and nature of the surface. Sometime you wear your slipper, कभी कभी आप चप्पल पहनते हो तो आपको लगता है कि हम फिसल जाएंगे. कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं पर आप जा रहे हो, वहाँ पर ऑयल है या कुछ ऐसा है, तो वहाँ पर भी लगता है फिसल जाएगा. मीन्स सतह की कैसी है, व्हाट इज द नेचर ऑफ सरफेस इज ऑल्सो द फैक्टर विच अफेक्ट्स द फ्रिक्शन. Now we had discussed the type of friction. So here the rolling friction is less than sliding friction and sliding friction is less than static friction. The frictional force exerted by fluid when the object moves through them is called fluid friction or drag force. So whenever you apply a force to break the liquid layers, means liquid layers are also sliding on each other, they also have a friction force, and that friction force is known as viscous force or dragging force. So this is the friction between the fluid or in the liquid layer. So there are four type of friction: static friction, sliding friction, rolling friction, and fluid friction. These all the type of friction are discussed in your NCERT. So go through your NCERT, find the content over there, and again you have to relate with your daily life experiences and definition also there, and you have to understand what the concept is given in that NCERT or your reference book and what I had told in this video. You match all this thing. If you have any problem, then we will discuss in the next video. So in this video we are here ending here till the type of friction. What we had discussed in this video, we had discussed the type of friction, we had discussed the cause of friction, we had discussed what is friction, and so many terms we also use in this video. So till here I am ending this session here. In the next video we are going to solve some problem on this friction, and what is angle of repose we'll discuss in the coming video. But before that you have to revise very honestly this topic, these topic whatever we have discussed in this